Hello students, welcome once again in DSS online classes. Myself Chaman Singh, and today we shall study Civics chapter first, that is Understanding Diversity. Student, this is our part third video of this chapter, and in this chapter we shall clear the next topic, that is what does diversity add to our lives. Student, if you have studied the previous video, that was the part second video of this chapter, in which I taught you about two different people. One was Samir Ek and the other was Samir Do. Student, you saw that both were different in their religion, in their lifestyle, in their language, and in their occupation. But they became friends. आपने देखा है कैसे समीर एक और समीर दो दोनों अलग धर्म से थे, अलग उनकी लाइफ स्टाइल थी। जहाँ एक और जो समीर एक जो गरीब बच्चा था, अखबार बेचता था, तो वही समीर दो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट था और वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज बोलता था, जबकि समीर एक को सिर्फ हिंदी बोलनी आती थी। नाउ स्टूडेंट, बट बिकॉज बोथ वर थिंकिंग and both were emotionally attached to each other and became a good friends. Now, students, in the same way, diversity adds to our life in different ways, like different ideas, different languages, different cultures, different traditions. For example, if you see, if you become friends with someone who is different from you, अगर आप किसी से दोस्त बनते हैं जो आपसे क्या हो, अलग हो, then you can learn many things from your friends, like you can know more about the different kinds of foods that your friend eat, the festivals that he celebrates or she celebrates, or you also tried out their clothes that they wear and the language that they speak, you can learn. अर्थात अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से या किसी ऐसे लड़के या लड़की से दोस्त बनते हैं जिसका धर्म अलग हो, जिसका खान पान अलग हो, जिसकी भाषा अलग हो, जिसका पहनावा अलग हो, तो आप भी उसको सीख सकते हैं और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या होगा, उसमें वो डाइवर्सिटी जो है, वो डिफरेंसेस जो है वो ऐड हो जाएगी। पहले आप सिर्फ अपने ही फूड के बारे में, अपने ही फेस्टिवल के बारे में, अपने ही लैंग्वेज के बारे में जानते थे, लेकिन अगर आप किसी डिफरेंट पीपल से दोस्त बनते हैं तो नाउ आप उसके साथ उसके फूड, उसके कल्चर, उसके फेस्टिवल्स को शेयर करते हैं और ये आपके लाइफ में एक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है। नाउ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यू कैन आल्सो know about different ideas. Suppose that you want to learn, you want to read different kinds of stories, you want to study different kinds of books which help you to know different ideas, different imagination. For example, if you live near the forest, so your ideas would simply write about the forest life or write about the animals life. अगर आप जंगल के करीब रहते हैं या सपोज दैट अगर आप वन में रहते हैं तो आपकी जो नजदीकी होगी या आपकी जो सोच होगी उसमें आप मोस्टली एनिमल्स के लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके फाइट्स, फ्रेंडशिप के बारे में लिखना पसंद करेंगे। और suppose that if you want to know about the real accounts of kings or queens or the ruler of olden time, then you can write about their love and honor, about their friendship and fights. अगर आप किसी राजा रानी की कहानियों के बारे में, किसी पुराने जमाने के शासक के बारे में, उसकी रियल लाइफ स्टोरी को जानना चाहते हैं, तो उसके आधार पर आप उसके लव के बारे में, उसके ऑनर के बारे में, उसकी फ्रेंडशिप के बारे में, उसकी विक्ट्रीज के बारे में आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट, such type of books or the stories help us to create the new ideas, to generate the new imagination about the society, about the
लाइफ। अगर इस प्रकार से जो भी कहानियां होती हैं पुराने जमाने की, या जो भी किस्से होते हैं, वो हमारे हमें कुछ नए विचार देते हैं, कुछ नई कल्पनाएं देते हैं, जिससे कि हम नई नई चीजों के बारे में लिख सकते हैं, जान सकते हैं। और स्टूडेंट, सपोज दैट इफ देयर वेयर नो डाइवर्सिटी, suppose that if you are forced to live in a place where you have to wear only two colors of clothes, मान लो कि आपको एक ऐसे जगह पर रहने के लिए विवश कर दिया जाए जहां पर आपको सिर्फ दो ही तरह के कपड़े पहनने को मिलते हैं। अगर आपको ऐसी जगह पर रख दिया जाए वेयर यू कैन ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, लाइक एग्जाम्पल के लिए पोटैटो, अगर आपको ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहाँ सिर्फ आपको खाने के लिए आलू ही मिलता हो, और सपोज दैट यू live in a place where you can see only two type of animals like deer, cats और like dogs, cows। अगर मान लीजिए ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको सिर्फ दो ही जानवर, हिरन या बिल्ली देखने को मिले, या कुत्ते या गाय ही देखने को मिले सिर्फ, एंड you only know about the playing or about the entertainment of snakes and ladder types of games। अगर आपको खेलने के लिए सिर्फ एक ही तरह का गेम हो, सांप सीढ़ी जो लूडो में आप खेलते हो, तो देन थिंक हाउ वुड यू इमेजिन, हाउ वुड यू क्रिएट योर स्टोरीज अबाउट योर लाइफ। तो जरा सोचिए कि अगर आपके जीवन में सिर्फ दो ही रंग हो, सिर्फ एक ही तरह का फूड हो, सिर्फ एक ही तरह के एनिमल्स देखने को मिले, तो आपकी जो स्टोरीज होंगी वो कैसी होंगी। स्टूडेंट, इमेजिन योर स्टोरीज और योर थिंकिंग वुड बी similar in their kinds, and you will write your stories about the similar kinds of things, and it would be very boring and very tasteless। अर्थात अगर आपके जीवन में सिर्फ एक ही चीज को रख दिया जाए, आपको डिफरेंट कलर्स ना दिए जाए, डिफरेंट फूड आइटम्स ना दिए जाए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आपको ना दिए जाए वेयर करने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक एक ही तरह की सिमिलैरिटी रहेगी, और उससे क्या होगा, लाइफ जो है वो बोरिंग हो जाएगी, आप लाइफ को ठीक ढंग से एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट, it shows that diversity is very very important to live our life in a very well manner। डाइवर्सिटी जो विभिन्नताएं होती हैं, विविधताएं होती हैं, वो हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हमारी लाइफ को सही ढंग से स्पेंड करने के लिए, सही ढंग से जीने के लिए। स्टूडेंट, if you see the next topic, that is diversity in India, because we are Indian, so it is also important to know the diversity of our country। अर्थात भारत में विविधता क्या है। How does we know about the diversity of India? Student, if you see the diversity in India, you find that India is a diverse country in the world, and where people speak different kinds of languages, जहाँ लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। If you go in Jammu and Kashmir, you can find out the Dogri language or Kashmiri language। If you go to Punjab, you can hear Punjabi language। In Bengal, Bengali। In the southern region, Tamil Nadu, you will hear people speak Tamil। Andhra Pradesh, people speak Telugu। In Rajasthan, people speak Rajasthani language. In Delhi, people speak Hindi language। So these are the parts of our country where people speak different kinds of languages। It is the diversity of language in our country। If you see the food item, student, people eat different types of food in different parts of the country। If you go in Gujarat, people eat dhokla। If you go in Maharashtra, you will see people use bel puri, batata vada, pav bhaji। If you go to Bengal, people like to eat machi and chawal or rasgulla। If you go into the southern region, Tamil region, Tamil Nadu, you will see idli, sambar, dosa. In Bihar, litti and chokha। So these are the kind of food which people eat in different parts of the
country. So this is also the diversity in food. Now student, if you see the religions which we practice different kinds of religion in our country, like Hinduism, like Islam, like Sikhism, Jainism, Buddhism, Judaism, Parsism. Student, these are the kinds of religions. Christianity also the people celebrate, which also makes India a diverse country in the world. Now, student, these are the kind of diversity or the kind of differences you see among the people who live in India, and it also makes India a unique country in the world. Student, you also think that in reality most of the things are similar but we use them differently. अर्थात अगर आप एक्चुअली देखें तो सारी जो चीजें हमने बताई आपको, ये सारी चीजें बस कहने के लिए अलग है। बस ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये सारी चीजें जो है वो इनमें बहुत सारी सिमिलरिटी, बहुत सारी समानता है, बट वी ओनली यूज देम इन डिफरेंट वेज। बस अंतर क्या है कि हमारा जो इनको प्रयोग करने का तरीका है, इनको मनाने का तरीका है, वो अलग है। अदरवाइज ऑल दीज आर the same. So student, these are the topic for today. I hope you have listened properly. If you have any doubt, any problem, you can ask or comment on my WhatsApp number. Till stay safe, stay happy. Good luck.